In this module, we will talk about nanostructured metals and alloys. So nanostructuring is a new and promising way to enhance the properties of metals and alloys for advanced structural and functional applications. नैनो स्ट्रक्चर एक न्यू और एफिशिएंट वे है मेटल की और अलॉयज की प्रॉपर्टीज को इन्हांस करने का इन ऑर्डर टू अचीव better structural and functional applications. Nanostructured material is made of grains or other microstructural entities that have average size 100 nanometer or less in length at least in one dimension. अब nanostructured material है क्या और कैसे बनता है? In actual, nanostructured material is formed by the accumulation of microstructural entities. Microstructural entities आपस में मिलके नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज नैनो स्केल यानी उनका जो एवरेज साइज है वो लेस देन 100 नैनोमीटर होता है और दे आर एटलीस्ट इन वन डायमेंशन. Other entities include precipitates, second phase, a third phase, etc. और कुछ other entities precipitates भी हो सकते हैं like second phase है and third phase. This table is about there are some metals and it is described that how many years ago they have been discovered, like gold approximately 3500 years ago, and copper was in 4000 BC before Christ, and bronze in nearly 1200 BC, and like others. Metal nanoparticles. Nanostructured metals के अंदर the famous example is of metal nanoparticles. The term metal nanoparticles used to describe nano-sized metals. Metal nanoparticles means nano-sized metals with dimensions within the size range 1 to 100 nanometers. ऐसे particles जो कि metal पर मुश्तमिल हैं और वो nano scale पर बनाए गए हैं, they are the nanoparticles. और उनकी जो dimensions हैं, either length, width or thickness, they are in nanoscale, means 1 to 100 nanometer. The existence of metallic nanoparticles in solution was first recognized by Faraday in 1857. 1857 में the Faraday एक साइंटिस्ट था जिसने रिकॉग्नाइज किया the existence of metal nanoparticles in solution, and a quantitative explanation of their color was given by me in 1908. और उनके जो कलर की एक्सप्लेनेशन थी या क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन थी वो 1908 में द अनदर साइंटिस्ट मी ने एक्सप्लेन की. Metal nanoparticles are a clear example of how the properties of matter can change at the nanometer scale. मेटल नैनोपार्टिकल्स के जरिए हमें पता चल सकता है कि किस तरह मैटर की प्रॉपर्टीज नैनोमीटर स्केल पर चेंज होती है. फॉर एग्जांपल, metal gold is notably yellow in color and used for jewelry. We know that the metal gold, which is a metal, is yellow in color और वो mostly वो jewelry के अंदर use होता है. As the noblest of all metals, gold is very stable because it is a noble metal, so gold is very stable. Now we will discuss that how the properties of gold has been changed when go to the nanoscale. However, if gold is shrunk to a nanoparticles, अगर gold जो है उसके nanoparticles बनाए जाएं, it changes color, becoming red if it is spherical. कि वो कलर चेंज कर लेता है और रेड हो जाता है उसका कलर अगर वो स्फेरिकल हो, एंड इवन कलरलेस इफ इट इज शेप्ड इन अ रिंग, और वो कलरलेस हो जाता है अगर उसकी जो शेप है वो रिंग टाइप हो जाए. This is the clearly example that we have discussed in previous lecture, that the properties of the nanoscale depends upon many factors including size and shape of the nanoparticle. So if the shape has been changed, the properties have been changed. Like here we discussed the example of gold nanoparticle. Moreover, gold nanoparticles become very reactive and can be used as new catalyst. गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो न्यू कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज
हो सकते हैं. The main characteristics of metallic nanoparticles. So let's discuss what are the basic features of metallic nanoparticles. They have large surface area to volume ratio as compared to bulk equivalents. It is a property of every nanoparticle that they have large surface area. If they have large surface area, they have large surface energies, plasmon excitation, they have quantum confinement, short range ordering, increased number of kinks. Increased now, if a nanoparticles have increased number of kinks, it is property that it can have a special arrangement of atoms. अगर एक nanoparticles के अंदर kinks की नंबर ज्यादा होगा तो उसकी एबिलिटी है कि उस पार्टिकल के अंदर जो एटम्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाई जा सकती है. A large number of low coordination sites such as corners and edges having a large number of dangling bonds and consequently specific and chemical properties and the ability to store excess electrons. लो कोऑर्डिनेशन साइट्स जैसे कि कॉर्नर्स हैं एंड एजेस हैं, ये लार्ज नंबर में पाए जाते हैं इन पार्टिकल्स में, जिसकी वजह और इनमें जो डेंगलिंग बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इंजीनियर कर सकते हैं या हम एडअप कर सकते हैं उन मटेरियल्स में. एंड दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकते हैं. सो इफ दे हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स they can used in amperometric sensors too. Plasmonic structures. Noble metal nanoparticles meaning gold, silver, platinum and palladium nanoparticles show localized surface plasmoresonance. LSPR phenomenon we have discussed in previous lectures. So in this lecture we will discuss that metallic nanoparticles have high LSPR property, and because of this LSPR property, how they have efficient applications. The energy of the LSPR depends on the particle shape, size, composition, interparticle spacing and dielectric environment. जो LSPR की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है पार्टिकल की शेप पे, उसके साइज पे, कंपोजिशन पे और डाई इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट में. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि metallic nanoparticles have higher ability to access electrons, so they have good dielectric environment, and because of this environment they show efficient LSPR property. The surface of the nanoparticles can be functionalized with numerous chemical and biochemical molecules, enabling specific binding of organic molecules such as antibodies, making them useful in sensors. अब large surface area है तो हम इन नैनो मटेरियल्स के ऊपर फंक्शनलाइजेशन कर सकते हैं. फंक्शनलाइजेशन मीन्स कि हम कोई भी केमिकल या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल लाइक कोई एंटीबॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हम उसके ऊपर कोट कर सकते हैं और उस कोटिंग से हम उनको डिटेक्शन पर्पस के लिए यानी सेंसर्स में यूज कर सकते हैं. Special interest for optical detection and sensing in analytical chemistry and molecular biology. These particles have a special interest for the sensing in analytical chemistry and molecular biology because they have high refractive index. The refractive index can be used as a sensing parameter, or we can use that refractive index in the sensing parameter. Changes in the local dielectric environment induced by sensing process are used to detect the binding of molecules in the particular nano environment. The change in the aggregation between the nanoparticles as a result of analyte attachment affects the LSPR energy. अब जो nanoparticles have the ability to form aggregates. अब अगर aggregates में change आता है nanoparticles में तो वो analyte की attachment जो होगी वो LSPR की energy को disturb यानी affect कर सकती है, और इसी वजह से they are used for highly miniaturized sensors. अब इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स को मिनिएचराइज सेंसर यानी ऐसे सेंसर जो एनालाइट की बहुत कम क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. Reinforcements. Metal nanoparticles are used as reinforcement in alloys for applications in lightweight construction with the aerospace sector and increasingly the automotive sector.
ऑटोमोटिव सेक्टर में, कंस्ट्रक्टिव पर्पस में, एरोस्पेस सेक्टर्स में these nanoparticles alloys में यूज होते हैं and have so much applications. The simple example is to harden the steel. ये स्टील को हार्ड करने के लिए यूज होते हैं. Titanium nanoparticles are used as an alloy compound in steel and the resulting material shows improved properties. स्टील के अंदर टाइटेनियम के नैनोपार्टिकल्स यूज किए हैं which results in improved properties, जिससे स्टील की प्रॉपर्टीज जो है वो improve हो जाती हैं with respect to robustness, ductility, corrosion and temperature resistance. Particles of iron carbide are also participated in steel to make it harder. Iron carbide के particles भी steel को harder करने में मदद देते हैं. The nanoparticles block the environment of dislocations if the crystalline material increasing the hardness. Nanoparticles block कर देते हैं movement को अगर crystalline material के अंदर they block the movement of dislocations, जिसकी वजह से हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है. Environmental applications, metallic nanoparticles have rich environmental applications. Some forms of metal nanoparticles have important environment applications. Zero valent iron nanoparticles are under investigation for the remediation of contaminated groundwater and soil. ज़ेरे ज़मीन जो contaminated water है उसकी रेमिडिएशन के लिए आयरन के नैनो पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा है. आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर oxidize easily to rust. However, when it oxidizes around contaminants such as trichloroethane, carbon tetrachloride, dioxins, or PCBs, these organic molecules are broken down into simple, far less toxic carbon compounds. Iron जब एक्सपोज होता है या ऑक्सीडाइज होता है अराउंड द कंटेमिनेंट्स, और ये जो कंटेमिनेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स ट्राइक्लोरोइथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जब आयरन इनके अराउंड ऑक्सीडाइज होगा तो वो इनको ब्रेक कर देगा इनटू सिंपल कंपाउंड्स और वो लेस टॉक्सिक हो जाएंगे. सो आयरन नैनो पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव देन कन्वेंशनल आयरन पाउडर. अब एक जब हम ये जानते हैं कि आयरन के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनमें उनकी प्रॉपर्टीज इन्हांस्ड हैं एज कंपेयर टू द बल्क आयरन, सो इट कैन बी यूज्ड टू क्लीन अप द इंडस्ट्रियल वेस्ट and the contaminations in the environment. Iron nanoparticles are 10 to 100 times more reactive than commonly used iron powders. और iron के nanoparticles जो हैं वो 10 से 1000 times ज़्यादा reactive हैं. Silver nanoparticles have a strong antibacterial capacity. Silver nanoparticles की antibacterial capacity बहुत strong है. They are used in numerous products to prevent or reduce the adherence of bacteria to the surfaces. और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं ताकि बैक्टीरिया की एडहेरेंस से बचा जा सके. The famous example is sticky plasters that we used for the purpose of wound healing contain the silver nanoparticles. Thank you.